Welcome to RV Laws. In today's video, I am going to deal with Digital Data Protection Act 2023 जो कि लोकसभा के द्वारा 9th अगस्त को पास किया गया था and further it got assent of President on the 12th of August 2023. It is the first law which has brought in India with respect to the data protection. Earlier, before this act, there was no such specific law dealing in this area. Though we have the Law of Information Technology Act and the Right to Information Act dealing with to the extent of information. Likewise, the disclosure of information has been dealt in the Information Technology Act 2000, and with respect to the disclosure of information deals with the Right to Information Act 2005. Data Protection Act 2023 जो कि अब एक्ट बन चुका है. Earlier it was only a bill. Got assent of President recently on the 12th of August and it got passed from the Parliament on the 9th of August. Earlier, before this Data Protection Act, we didn't have a particular law dealing with the data protection. However, we had the Information Technology Act 2000, which somewhat deals with the protection of data with respect to disclosure of data in the public and the disclosure of data to the online websites and companies dealing with like WhatsApp, Facebook, to the extent only. But we didn't have a particular law. This particular law has been brought by the Parliament to give the effect of right to privacy as declared by the Honorable Supreme Court. In this particular law, the Digital Data Protection Act that came into force now, it has got to give the effect to the right to privacy as declared by Honorable Supreme Court through the judgment of case Puttaswamy, which is known as the Aadhaar judgment that came into 2018 itself. A special law with respect to the protection of data that was required since long. In India, we didn't have particular law dealing with the Data Protection Act. However, in other countries like US, UK, and all the European countries have particular law dealing with the data protection. But India में ऐसा कोई special law नहीं था. आधार judgment के बाद, the Supreme Court when declared the right to privacy is a fundamental right included in Article 21 and directed the government to come up with the protection of law with respect to the privacy law. This particular law basically Aadhaar judgment को validate करता है. The right to privacy, which is now a fundamental right, enshrined in Article 21 as declared by Honorable Supreme Court through the Aadhaar judgment, which is known as case Puttaswamy. In India, we didn't have particular law. However, it was required since long back then, the centuries. But the same law, the data protection law, in other countries are prevalent since long back then, from the 1800 and something like. डेटा प्रोटेक्शन हमें इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज आजकल के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि हम जब भी कुछ क्लिक करते हैं लाइक वाज वेन एवर यू गो टू शॉप ऑनलाइन you open Amazon, you open Instagram and search a particular store. All the data which we are providing is somewhere being gathered by the online stores or big giants or big tech giants or companies and being said. In this particular era of the technology, we need a particular protection of our data. We need to protect our data, and this particular law, which is Digital Data Protection Law, deals with the same, and it gives a particular mechanism, a set of mechanism where the companies and all the companies, government, private individuals and organizations are required to follow the law. Let's proceed with a brief analysis of the act. The Digital Personal Data Protection Act 2023 consists of 44 sections and one schedule. And if we read the objective of the act, which is the preamble of the act, according to the preamble of the act, it provides to protect the personal data of the individual and provides a mechanism in a way that the processing of personal data should be protected and should be used for lawful purposes. The Digital Data Protection Act basically टोटल इसके 44 सेक्शन है एंड एक वन शेड्यूल है. शेड्यूल में बेसिकली पनिशमेंट की बात करता है एंड ऑल द पर्टिकुलर सेक्शंस टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूसरी एंड
प्रिंसिपल डेटा एंड द इंडिविजुअल्स whose डेटा इज being प्रोसेस्ड। ये जो एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बेसिकली एक मैकेनिज्म सेट करता है जिसके थ्रू जो कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट जो डेटा प्रोसेस करेंगे उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड द कंपनीज ऑल्सो, be it company or be it any organization or anyone who is processing the data of particular individual। Let's talk about the definition clause। डेफिनेशन क्लॉज में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ही ऐसे टर्म्स हैं जो हमें समझना चाहिए, जैसे कि डेटा क्या है, पर्सनल डेटा क्या हुआ, डिजिटल डेटा क्या हुआ, एंड एक टर्म है डेटा फिडुसरी, देन द सेकेंड वाज प्रिंसिपल डेटा। Let's talk about the definition clause। There are certain sub clauses in the definition clause which we need to understand to proceed further। One of them is, let's subclause H of clause 2 talks about data, which means representation of information, fact, concept, opinion और instruction। अगर हम इंटरप्रिटेशन में जाए इस पर्टिकुलर क्लॉज के, तो डेटा का मतलब होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, उसका ओपिनियन और एनी कॉन्सेप्ट विच रिलेट्स टू हिम और एनी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हिम with respect to particular data। The next important subclause of clause 2, which is subclause J of clause 2, that talks about the data principle। Data principle has been defined as the personal data of an individual। Basically the data principle वो होगा जिसका डेटा, जिसका पर्सनल डेटा प्रोसेस होगा किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट for a lawful purpose only। And in case the data belongs to a child, her legal guardian would be the individual with child, and in case of person with disability, her heirs। The next important subclause is subclause I, clause 2, which talks about basically whose data fiduciary। Data fiduciary is someone who takes your personal data, be it a company, be it an organization, be it a government, or anyone who process the personal data of an individual। Likewise, in case of Amazon, if you go to the shopping and you open the Amazon website, here the data fiduciary will be the Amazon। The data principal would be the someone whose data has been taken or processed for any lawful purposes। The next important subclause of clause 2, which is subclause U, that talks about the personal data breach। Personal data breach will mean like any unauthorized use of your personal data for the purpose of taking advantage or gain or misusing your data without your authorization, be it a disclosure, be it acquisition, be it sharing your data। Now let's talk about clause 3, which talks about the application of the act। The Digital Personal Data Protection Act basically applies within India and outside India also। Likewise, your data has been collected in India for any purpose which you have authorized, this will cover in an act। However, if a company which is outside India and that offers you a goods and service, and for that purpose that takes your personal data, that particular act is also covered in this act। For instance, एक कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएट है और वो आपको कोई गुड्स एंड सर्विस ऑफर करती है, एंड फॉर दैट पर्पस यू प्रोवाइड योर पर्सनल डेटा टू हिम for the processing of that particular service, and in case that company breaches your data, this particular act will be applicable to that particular company। Now let's talk about clause 4। Clause 4 basically talks about that any person, be it a company or organization or whosoever, may process personal data of an individual only in accordance with the provisions of this particular act and for the lawful purposes। There are two conditions given in this particular clause। The first condition is that any person who processes the personal data of an individual can use for the legitimate purpose only, and on the ground that the person who has given consent। Without consent, a person cannot process the personal data of anyone। The next important clause that we are going to talk about is clause 5। The clause 5 basically mandates a notice to be given to individual whose data is going to be processed, and in that notice the particulars shall be contained, like in what manner the data is going to be used and what for the
what purpose, a specified purpose will be given in the notice, and the notice shall also contain in what manner the particular individual can exercise or can complain in case of any breach. Clause 5 of the act basically mandates a notice shall be given to the person whose data is going to be processed, एंड उस नोटिस में जो कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल जो डेटा प्रोसेस करने जा रही है पर्सनल डेटा को, वो बेसिकली बताएगी कि किस पर्पस के लिए डेटा लिया जा रहा है, एंड द नोटिस हैज आल्सो कंटेन in what manner an individual can exercise their rights or make a complaint in case of breach of data. The requirement of notice is mandatory for everyone who is willing to process your data, your personal data. Likewise, कोई कंपनी है जो आपका डेटा पहले से स्टोर है उसके पास, बीट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एनी XYZ कंपनी, अगर जैसे ये एक्ट इन्फोर्स में आता है उसके बाद उस कंपनी के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजे थ्रू ईमेल और एनी मीन्स, और आपको इन्फॉर्म करेगी कि किस पर्पस के लिए डेटा आपका यूज़ हो रहा है. इफ़ यू फील दैट द पर्पस दैट हैज़ बीन गिवन बाय द कंपनी और व्हाट whomsoever is not legitimate, you can revoke your consent, and that particular company cannot proceed further with your data, and he or she whatever has to erase your data or delete the data from their storage. The next important clause that is clause 6. Clause 6 basically talks about the consent. In this act, the consent has made a most prominent thing for the processing of the data. Any company, organization or individual who is going to process your data for any legitimate use needs to seek your consent. If you provide the consent for that particular service or goods, whatever they are offering to you, only that particular consent is required. And since if you find that the purpose is not legitimate or not specified, you can revoke your consent. Once you revoke the consent, that particular company, individual, whomsoever has processed your data needs to delete your data immediately after revoking the consent, and this has been made mandatory by this particular section. Section 6 के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी या कोई इंडिविजुअल आपका डेटा अगर प्रोसेस करता है किसी पर्टिकुलर लेजिटिमेट यूज़ के लिए, कोई स्पेसिफाइड यूज़ के लिए, तो उन केसेस में आपका कंसेंट रिक्वायर्ड है. अगर आप कंसेंट देते हो किसी चीज़ के लिए तभी वो आगे बढ़ सकते हैं आपका डेटा लेकर के. अगर आपने कंसेंट नहीं दिया तो नहीं बढ़ सकते, और ऐसे केसेस में डेटा का ब्रीच माना जाएगा एंड अनऑथराइज यूज माना जाएगा विदाउट द कंसेंट. फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, कोई भी टेलीमेडिसिन का एप्लीकेशन जो ई-फार्मेसी का है, और आप वहाँ पे दवा खरीद रहे हो, आपने प्रिस्क्रिप्शन लोड किया जो कि आपका पर्सनल डेटा उसके पास चला गया. अब वो एप्लीकेशन आपसे कंसेंट लेगा उसको प्रोसेस करने के लिए, एंड आपका कंसेंट ले करके प्रोसेस करेगा, देन आपको मेडिसिन अवेल करवाएगा. अगर आप कंसेंट नहीं देते हो तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा. अगर मान लो कि वो एप्लीकेशन आपसे कंसेंट मांग रहा है, एक तो पर्सनल डेटा, और सेकंड कंसेंट मांग रहा है कि आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के लिए. अब किसी भी दवा को अवेल कराने के लिए आपको केवल दवा लेना है, बट वो कंपनी आपसे फ़ोन का एक्सेस मांग रही है और आपने कंसेंट दे दिया. आपने कंसेंट जिस पर्पस के लिए दिया उसमें तो सेकेंड कंसेंट दिया है जो कि आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट लेने के लिए, वो पर्टिकुलर कंसेंट इनवैलिड माना जाएगा. बट वो कंसेंट केवल उसी पर्पस के लिए यूज होगा जो कि दवा अवेल कर सके, क्योंकि दवा अवेल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी नहीं है. Now let's talk about clause 8, which is a very important clause. Clause 8 basically बात करता है a general obligation which has been casted upon the data fiduciary. Data fiduciary मतलब इंडिविजुअल और कंपनी और पर्सन जो कि आपका पर्सनल डेटा को प्रोसेस करते हैं फॉर एनी पर्पस. क्लॉज 8 ये बोलता है कि जो डेटा फिड्यूसरी होगा वो आपका डेटा केवल आपके कंसेंट से ले सकता है और एक लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, एंड दैट पर्पस विल बी सो स्पेसिफाइड, not in general for anything, right? And in case of breach of your personal data, that data fiduciary will notify the data protection board and to you also. If he और कंपनी और कोई इंडिविजुअल अगर ऐसा नहीं करता है तो उस पर एक हैवी पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, विच इज़ अ फाइन अप टू 200 crore रुपीज़. अंडर क्लॉज 8 बेसिकली अगर कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर anyone who has processed your personal data for the legitimate purpose with your consent, अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करता
करता है और जो भी कंसेंट के लिए लिया है, जिस पर्पज़ के लिए लिया है, उस पर्पज़ से डेविएट होता है और आपका पर्सनल डेटा को ब्रीच करता है, ऐसे केसेस में उसको द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करना पड़ेगा एंड यू ऑल्सो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर एक हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, विच इज़ अ फाइन अप टू 200 रुपीज़, 200 crore rupees. As we are making a series of privacy law, in this particular video we have dealt with certain clauses of Personal Data Protection Act. However, the next some important clauses will be dealt in the next video. If you find the video informative, please do like, share and subscribe to RB Laws. Thank you.